Welcome to another edition of Elections Unlocked, your primetime destination for all that's happening this poll season that is getting hotter by the week, as is the weather across large parts of the country. The Prime Minister and the Congress leader Rahul Gandhi are now both on the campaign trail and have hit the ground campaigning across the country. Typically, both sides are targeting each other. The Congress, remember, came up with its manifesto on Friday, and the BJP is trying to somewhere target the Congress party as a principal opponent, especially in the Hindi heartland. The Prime Minister even going to the extent of drawing a parallel between the Congress manifesto and the Muslim League, accusing it of fostering sentiments aimed at undermining national unity. The Congress hitting back, going to the Election Commission, accusing the Prime Minister of spreading falsehoods and hate speech. Rahul Gandhi once again attacking the Modi government on the issue, he says, of rising unemployment of the country. The Prime Minister was in Chhattisgarh. Rahul Gandhi was also, as today, in Madhya Pradesh. So both of them in that critical Hindi heartland of the country. Prime Minister even warning of more arrests that could take place in the weeks ahead, claiming it's part of his campaign against corruption. Let's listen in to two of the principal players on the Election Unlocked. कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। Meanwhile, the Aam Aadmi today launched its latest poll slogan, Jail ka jawab vote se. Effectively, the Aam Aadmi Party is seeking votes in the name of its jail leader, Arvind Kejriwal. This on a day when fresh summons were served to another AAP MLA, Durgesh Pathak, in an excise policy case, and also to a personal assistant of Mr. Kejriwal. Take a look at how the Aam Aadmi Party is trying to use Kejriwal's arrest to build up sympathy for the party. A fresh poll campaign launched by Aam Aadmi Party and a fresh summons slapped by ED to another AAP MLA in excise policy case. 12 days before the first phase voting takes place, AAP launched a fresh campaign for the Lok Sabha polls in Delhi, asking people to respond to Chief Minister Arvind Kejriwal's arrest 3 weeks ago by voting in support of the party. उसको जेल में डाल दिया जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। Monday's fresh poll pitch comes a month after Arvind Kejriwal and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann
launched the party's Lok Sabha national campaign. Sansad में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल. The latest jail का जवाब वोट से slogan is going to be added for campaign outside Delhi as well. एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक जेल. नारा तो ये लेना चाहिए इनको. जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं हो रहा, एक पैसा दिखाई नहीं दे रहा, तो 28,600 करोड़ गया कहाँ? ये इतना बड़ा घोटाला है जल बोर्ड का, और आप बैलेंस शीट ऑडिट नहीं करा रहे. ऑडिटेड बैलेंस शीट्स नहीं है, बैलेंस शीट ही नहीं बना रहे. On the same day, the Enforcement Directorate summoned another AAP leader, Durgesh Pathak. The Rajendra Nagar MLA from Delhi was in charge of party's Goa Assembly polls. ED alleges that Durgesh Pathak was involved in receiving kickbacks in the Goa polls. The cash of 45 crore was routed by multiple companies to AAP. ED claims that the DMLA played a key role in the alleged Liquorgate scam. Why is this sham of a summon and investigation? सब जेल में बंद कर दो ना सबको. Their purpose is आपने if you have imprisoned the 4 tallest leader, one Mr. Sanjay Singh has now come out on bail, but if you could do that without any evidence, without any money trail, tomorrow you can do it with every MLA. If you want to put us behind jail, put it, क्योंकि वोट जेल का जवाब है, वैसे भी वोट से मिलने वाला है. Durgesh Pathak was last summoned by the central agency in 2022. Bureau Report, India Today. Joining me now is Preeti Chaudhary. My colleague joins me from the newsroom. Preeti, it seems that the Aam Aadmi Party is preparing for the possible inevitability of Mr. Kejriwal not being around in this Lok Sabha election. I know his bail application comes before the High Court tomorrow, but that slogan seems to suggest Jail Ka Jawab Vote Se, that they could well be preparing for Mr. Kejriwal having to fight this election behind bars. Well, you know, Rajdeep, the Aam Aadmi Party is a combative political outfit, and you know that better. So when you say that the Aam Aadmi Party is preparing to fight this election with Arvind Kejriwal incarcerated, believe me, I'm sure they have a couple of tricks up their sleeve, even if they don't materialize. You know, I'm very sure in the next coming days they're going to go to court and ask Arvind Kejriwal to come out, that, you know, he be let out only for campaigning. They are fighting elections on 21 Lok Sabha seats. And trust me, they will go to the court and say that we want Arvind Kejriwal to be released for campaigning on the premise of level playing field where this election is concerned. Whether that's entertained or not is separate. But trust me, they're going to do so. Where it comes down to their, you know, Lok Sabha slogan, which is Jail Ka Jawab Vote Se, it was introduced by that speech of Sanjay Singh. The night where Sanjay Singh was released from prison, Rajdeep, from Tihar, he'd gone to the Aam Aadmi Party headquarters, and, you know, there is strategy behind it. Then he had used the, you know, this particular line, Jail Ka Jawab Vote Se. Trust me, now in days to come, there'll be t-shirts with the same slogan. Sanjay Singh would be wearing that same t-shirt, campaigning, you know, in each of those 21 constituencies. Bhagwant Mann, in all probabilities, will be doing the same. So yes, if Arvind Kejriwal doesn't come out to campaign, the entire campaign is going to be around Arvind Kejriwal, and how at least what the Aam Aadmi Party will allege is their leaders being targeted unfairly and incarcerated. Okay, from a jailed chief minister, let's turn this election season to former chief ministers in great demand. They're all contesting as members of parliament. There you see some of them. Manohar Lal Khattar, former chief minister Haryana, contesting from Karnal. Shivraj Singh Chauhan, former chief minister Madhya Pradesh, is contesting from Vidisha, safe seat for their party. Trivendra Singh Rawat, former chief minister Uttarakhand, is contesting from Hardwar. We have Basav Raj Bommai, former chief minister Karnataka, lost last year his chair when the Congress won Karnataka, contesting from Haveri. Biplab Dev, former chief minister Tripura, is contesting from West Tripura. Sarbananda Sonowal, former chief minister Assam, is contesting from Dibrugarh, was in the Rajya Sabha, now moves to Lok Sabha. Kiran Kumar Reddy, former chief minister Andhra Pradesh, then in the Congress, now in the BJP, Congress contesting from Rajampet. Jagdish Shettar, former chief minister Karnataka, is contesting from Belgavi. And in the Congress list, we've got Nawam Tukhi, former chief minister Arunachal, contesting from Arunachal West. Digvijay Singh,
former Chief Minister Madhya Pradesh, two-time Chief Minister contesting from Rajgarh. Bhupesh Baghel, interesting name, contesting from Chhattisgarh few months after he lost that state rather surprisingly. So you've got lots of former Chief Ministers contesting as for MP-ship now. You've got Mehbooba Mufti, former Chief Minister J&K, contesting from a bastion in Anantnag. Ghulam Nabi Azad, former Chief Minister J&K, is contesting also from that seat. That's an interesting battle there. O. Paneerselvam, former Chief Minister of Tamil Nadu, is contesting from Ramanathapuram. All of this leads me to ask the question, why does a Chief Minister contest for a Lok Sabha seat? From being a Chief Minister, why become an MP? Some do it forcibly, they are forced to do it. Others voluntarily. What is Shivraj Singh Chauhan's story? I spoke to him when he joined us in our newsroom a couple of days ago. Listen in. Our special guest in the newsroom is the BJP's longest serving Chief Minister. He was the #1 face of the BJP in Madhya Pradesh for almost 2 decades and now contesting as an MP, back as an MP. शिवराज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया. शिवराज जी, ये बताइए, इस चुनाव में शिवराज सिंह जी पूरी ताकत से जा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो बेहतर होता, या किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है, आंदोलन है और देश की सेवा और जनता की सेवा करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि इससे बेहतर कोई पार्टी है नहीं. और जब आप किसी चीज को मिशन मानते हैं तो मिशन तय करता आप कहाँ काम करोगे. मुझे जो काम कहते हैं मैं आनंद और प्रसन्नता के साथ करता हूँ. और वो भी आप अपने पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, विदिशा, जहां आप 5 बार सांसद रहे हैं, जहां बीजेपी 84 से हारी नहीं है, तो आप बिल्कुल सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं. वहां कोई आपको टक्कर दे सकता है या नहीं? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये बात सही है कि जनता बहुत प्यार करती है बीजेपी से भी और विचारधारा से भी और मुझसे भी. इस चुनाव में इंटरेस्टिंग है, आप केवल एक मात्र मुख्यमंत्री नहीं है जो लड़ रहे हैं. मैं देख रहा हूं BS बोम्मई कर्नाटका से लड़ रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत लड़ रहे हैं उत्तराखंड से, मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे हैं हरियाणा से. ऐसा लगता है बीजेपी अपने पूरे पुराने मुख्यमंत्रियों को फौज की तरह लेकर आ रही है. इस पे पीछे कोई स्ट्रैटेजी है या क्या है? ये बीजेपी तय करती है अब किसको क्या काम करना है. हम लोगों को जब कहा है कि सांसद का चुनाव लड़के यहाँ काम करना है तो हम लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं. मेरे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता मेरे बाकी पूर्व मुख्यमंत्री साथीगण हैं, तो पार्टी ने जो भूमिका दे दी उस भूमिका में ही हम काम करते हैं. नहीं, पर खुशी क्योंकि नवंबर दिसंबर में 2/3 बहुमत मिलती है और ऐसे नेता जो इतनी बड़ी बहुमत लेकर आते हैं, लोगों ने कहा मामा जी तो वहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे. हम सब दंग रह गए जब कहा कि आप नहीं रह रहे मुख्यमंत्री. आप ये खुशी कर रहे हैं या ये जैसे आप कह रहे हैं कार्यकर्ता को सब कुछ करना पड़ रहा है? जीवन एक मिशन है. मैंने पहले भी कहा, जनता की सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है और पार्टी उसका माध्यम है. तो जो काम पार्टी देती वो खुशी करते हैं. तो मिस नहीं करते आप? नहीं, कोई सवाल. मुख्यमंत्री पद को मिस नहीं करते? 4 बार रहे जी. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन? मैं ही मुख्यमंत्री रहा. सब कुछ पार्टी ने दिया. अगर आप व्यक्ति के नाते मुझे देखें तो मैं 6 बार विधायक, 5 बार सांसद, 4 बार मुख्यमंत्री. मैं नगर संगठन मंत्री से लेके बीजेपी के प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष. और क्या देगी पार्टी? नहीं, एक और चीज आप बन सकते हैं, मंत्री. यूनियन मिनिस्टर आप अभी तक नहीं बने. क्या आपको लगता है इस बार आप मंत्री बनेंगे? तो ये बात पक्की है, मैं सांसद बन रहा हूँ. अच्छा, सांसद बन रहे, मंत्री बन रहे. लोग कह रहे हैं कृषि मंत्री बनेंगे अगर मोदी जी की सरकार आती है कि नहीं एक बार फिर. मेरे मन में केवल इतना है कि सांसद की भूमिका का निर्वाह मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ करूं. विदिशा संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊं, वहां की जनता की आदर्श ढंग से सेवा करूं, जनता के कल्याण के कामों में लगूं. अभी जो चीज मेरे सामने मैं उसी के बारे में सोचता हूं. तो मेरा आखिरी सवाल शिवराज जी आपसे है कि सब ये बीजेपी में बड़ा प्रचार चल रहा है, अब की बार 400 पार, 400 आएंगे, या ये केवल प्रोपेगेंडा है पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करने के लिए? अकेली बीजेपी 370 पार. 370 पार बीजेपी
एनडीए 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं ये कैमरा पर ले रहा हूँ। हाँ, मैं भी आज तक के न्यूज रूम में ये कह रहा हूँ। आज तक के न्यूज रूम में कह रहे हैं आप? ये महज नारा नहीं है। अब हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार। चलिए शिवराज जी, आपने एक नंबर दे दिया है, अब की बार 400 पार। 4 जून को देखेंगे कितने सीट आते हैं। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट आपकी नई भूमिका, नए रोल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you. Thank you. Shivraj Singh Chauhan, who's going to contest on a BJP ticket this time from his old bastion of Vidisha. Just one of the many chief ministers of the BJP who's out in this Lok Sabha race. Let me give you a quick update of what else is making the headlines in this election season. A Trinamool Congress delegation that included party leader Dola Sen, Derek O'Brien, Saket Gokhale and other MPs and MLAs were detained by the Delhi police on Monday. They were sitting on a dharna outside the Election Commission office seeking removal of ED, CBI, NIA and Income Tax Department chiefs. The BJP MP and Minister Smriti Irani once again targeted Rahul Gandhi over the Amethi seat, accusing Rahul Gandhi of questioning the loyalty of Amethi, asking Rahul Gandhi if he claims Wayanad is loyal to him, why not Amethi? The former Tamil Nadu Chief Minister E. Palanisamy has targeted the Stalin government, insisting that they are making fake propaganda and fake promises. He was speaking to India Today in an exclusive interview. Let's turn to today's ground report, and it comes from Bhilwara in Rajasthan. It's considered as one of the hot seats of the 25 Lok Sabha seats that shall witness elections in the first two phases in Rajasthan. Damodar Agarwal, who's the BJP State General Secretary, is contesting his first election against the Congress heavyweight CP Joshi. Here's a ground report filed by India Today's Devankur Wadhwa in a seat that will be closely watched in battleground Rajasthan. Bhilwara, one of Rajasthan's electoral battlegrounds, brims with anticipation as it gears up for upcoming Lok Sabha elections. The political heat intensifies as CP Joshi of the Congress locks horns with Damodar Agarwal of the BJP in this crucial constituency. For Agarwal, a seasoned politician and the BJP's State General Secretary, this marks his maiden foray into Bhilwara's electoral arena. In contrast, Joshi boasts a formidable track record, having served as the Congress Member of Parliament from 2009 to 2014. Alongside a ministerial stint in the Manmohan Singh government, he is known for channeling Chambal River water to parched areas. इस देश में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कौन देश पार्टी के नेतृत्व करने वाले थे? क्या राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति नहीं थे? क्या सोमनाथ जी का मंदिर उन्होंने निर्माण नहीं किया? मंदिर निर्माण करने से देश की समस्या का निदान हो गया। मंदिर भी हमने निर्माण किया, नीति भी हमने बनाई और देश का निर्माण करने का काम किया, ऐसे देश आगे बढ़ा। मंदिर बनाने का उन्होंने काम किया, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मंदिर बनना चाहिए, सबकी आस्था है, पर मंदिर बनने से देश की समस्याओं का निराकरण नहीं होता। BJP's Agarwal, boosted by his Rashtriya Swayam Sevak Sangh background and riding the wave of the Modi factor, seeks to leverage support from Sangh cadre and capitalize on the incumbent government's initiatives. मेरे दिमाग में, मेरे विचार में, मेरे संकल्प में 2047 है, जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र पूर्ण विकसित होना चाहिए. The textile industry, once the pride of Bhilwara, now stands as a symbol of unfulfilled potential and economic stagnation. Grappling with soaring power costs, stiff competition from foreign markets. We have been discussing this with the central government as well as with the state governments to create a textile park here, by which
there we can have a complete vertically integrated industry. We expect that in this particular after the next Lok Sabha election, Bhilwara must get much awaited textile parks so that we get wings to our textile expansions. The voters here have different hopes from their next representative. अनेक कई मुद्दे हैं। ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, पानी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था। बीजेपी की विधानसभा में 7 विधायक बीजेपी के हैं। यहाँ की जनता मतलब बीजेपी को चाहती है। दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी बहुत काबिल है। Who will Bhilwara's Janta repose faith in this poll season? Have been hoping that things will change for the better after a new government comes up post the Lok Sabha elections. With camera person Nikhil and Pramod Tiwari, Devankur Vadhavan in Bhilwara for India Today. Okay, that's all that we could pack in on this edition of Elections Unlocked. News and updates continue on the other side of the break. Keep watching India Today. Bye for now.